So in this lecture series, as you know, I am discussing the syllabic content of ethics. As I have told to you, syllabus of ethics in particular, essay in general, syllabus of UPSC is a very nice document, if I can, well crafted. In every paper, the syllabus is very mathematical. It moves from A to B to C to D, from 1 to 2 to 3, 4. It moves like that. In particular, ethics syllabus is a very good story. If you put in one word and you replace that word with another word from another place, the whole synchrony, the whole rhythm of that music becomes completely tantalized. बर्बाद हो जाएगा. So that context I am trying to get into your head that about this syllabus. And in this 10th lecture, as I have told in last two lectures, I have said that we have entered into part B of the syllabus. Part B of the syllabus relates to part B of your question paper. Part B of the question paper, you know, relates to your case study questions. So in this particular lecture, I will be taking in probity in governance. ठीक है, ये प्रोबिटी क्या होता है? अब तुम लोग बोलोगे कि अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी तो हम पढ़ लिए, तो सर वो और प्रोबिटी में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज द ब्यूटी. ईच एंड एवरी वर्ड, you know, as far as my understanding goes, there cannot be any synonym of any word in English language or in any language. कोई सिनोनिम हो ही नहीं सकता है. एंगर और रेज दोनों अलग अलग चीज है. हर वर्ड का अपना एक टेक्सचर होता है, अपना एक फील होता है. ठीक है. रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन, रेस्पेक्ट और डिग्निटी एक नहीं हो सकता है. एंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट you learn from reading this paper nicely. You become a very good user of English language. You become very qualified. मतलब लगेगा ना कि यहाँ पे तुम्हारा बोलते वक्त लगेगा कि यहाँ पे एक फिल्टर आ गया है. मतलब गलत बात निकलेगा ही नहीं उस फिल्टर से बाहर, या misplaced words it would never come out. Why? Because you know that those words are different. So probity in governance, as you know, literally also this is very important. क्योंकि गवर्नेंस तो हो गया. गवर्नेंस में कौन कौन आ गया? गवर्नेंस में हर पब्लिक सर्वेंट आ गया, सिविल सर्वेंट आ गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सब कोई आ गया. स्टेट आ गया, स्टेट विद कैपिटल एस. ठीक है. उसमें प्रोबिटी का आवश्यकता है कि नहीं है? प्रोबिटी इन गवर्नेंस, आई एम टेलिंग यू, प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज द एसेंस of establishing ethics in governance. Jawaharlal Nehru, what he used to say, sunlight is the best disinfectant. And Jawaharlal Nehru का ये कोई original statement नहीं था. Okay, he took it from Mark Twain, a philosopher and writer of America of later part of 19th century. Sunlight is the best disinfectant. सोचो कितना सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन कितना फिनोमिनल है. जहां पे सूर्य का प्रकाश आएगा वहां पे कोई कीड़ा, कोई जर्म्स, बैक्टीरिया रह ही नहीं सकता है वहां पे. whenever you do anything unethical, whenever government do anything unethical, it has to hide things. It has to hide things. Why you have Panama Papers? And why you have all those money stacked up in Virgin Islands? Because they had to hide things. Okay. Anything which you do, I am telling to you as well. If you are transparent, then you do not have to worry. You become fearless. The moment you become transparent, you become fearless. And this is the reason why probity in governance is the essence or soul of establishing ethics in governance. In this particular syllabic content, what you study? Concept of public service. See, there is difference between who is a public servant and who is a civil servant. Okay, there are IPC sections which defines public servants.
Okay, section 169, 174, 178 of IPC defines public servant, and there are civil servants as well. There is difference between public servant and civil servant. We would be discussing it later on. So never ever get confused if any question comes regarding that. Civil servant mandate is different and public servant mandate is different. Okay. Always remember that there is difference. So in a case study, if a question relates to public servant, you cannot bring in all those rules and etiquettes and laws as is applicable for civil servant. Okay. Every civil servant is a public servant, but every public servant is not a civil servant. Okay. In this there are various Supreme Court decisions as well. Okay. So concept of public service, philosophical basis of governance. गवर्नेंस का फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है? अब हम तो बोल दिए कि गवर्नेंस, बट गवर्नेंस का फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है? एक तो गवर्नेंस का फिलोसॉफिकल बेसिस वो है जो लियो टॉल्स्टॉय ने दिया था। लियो टॉल्स्टॉय ने दिया था कि क्या होता था पहले कि अलग अलग प्रकार के डाकू जो होते थे वो आते थे और खेत उखाड़ के, वो फसल उखाड़ के लेके चले जाते थे। तो उन डाकुओं में जो सबसे अच्छा डाकू था उसको गांव वाला बोला कि तुम हमारा सरकार बन जाओ और डाकू लोगों को मारना ताकि वो लोग ना आकर के लूटे, और बदले में हम तुमको थोड़ा बहुत अपने फसल का दे देंगे, तुम लूटना मत, दैट इज टैक्स। एक तो वो फिलोसॉफिकल बेसिस है, बट क्या सरकार उसी तरीके का होता है? वन फॉर्म ऑफ माफिया विच इज बेटर देन दी अदर माफियाज, क्या सरकार वही होता है क्या? फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस क्या है? फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नमेंट क्या है? इसमें अलग अलग जॉन लॉक का थ्योरी है, थॉमस हॉबियस का थ्योरी है, ठीक है, लास्की का थ्योरी है। वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स व्हेन वी गेट इनटू द डिटेल्ड क्लास। देन कम्स प्रोबिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यू नो प्रोबिटी का मतलब ही होता है, हम बताए ना कि सनलाइट इज द बिगेस्ट डिसइंफेक्टेंट। इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग जब आता है तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप क्रॉप करना चाहिए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, codes of ethics. One more interesting thing I would like to tell you. You know, when RTI was being formulated in 2002, you know that act was not RTI. बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, that was DTP. That was DTP, and DTP means duty to publish. In DTP, government was mandated to publish each and every report rather than you and me asking under RTI. At that time, government thought that this cannot be done by us because of the limitations. So they said they implemented a diluted form of DTP in the form of RTI. Earlier it was DTP, duty to publish. So all these things you would be discussing, and RTI becomes very very important as far as your case study questions are concerned. Remember, every year one question you have to you get from RTI. Okay, so this becomes important. Okay, so thank you for watching my video.